So good morning everyone. Now, Good morning, sir. good morning. Now, already yesterday I told you from today we start new topic, that is state transfer, and this is basically our, you can say, somehow this is our last topic. Okay, after completion of this topic, we revise. Okay, as much as if time permits. So the name of the topic is jet transform. So already we have studied so many transformation techniques, namely Fourier series with Fourier transform, Laplace transform, and with also their inverses, their usefulness, difficulties overcome. Okay. Now today we are going to start jet transform. So when we have studied your Fourier transform, over there we have seen that if the signal is completely integrable, then we can go for Fourier transform. Okay, but if the signal is not completely integrable, then we we prefer our Laplace transformation. We have seen that. Also, in the case of Fourier transform, we seen that Fourier transform basically it is only for imaginary part, that is j omega. J omega axis was there. Okay. So only the transformation was on imaginary axis, that is j omega axis. But in the case of Laplace transformation, what we have seen that there is a square. That means there is a real part as well as imaginary axis. Okay. Okay. So that was the case, but when we use jet transform, that you have to understand. We know what is the limitation of Fourier transform, why we go for Laplace transformations. Okay. Now here we use jet transform when, because we have studied DTFT, DTFT, that is discrete time Fourier transform. So in the case of discrete time Fourier transform, if that is not completely summable, okay, or if that does not have the finite value, then we can't use DTFT. So for that we have to go for jet transform. So see, this is your continuous time Fourier transform. What was the definition? X of j omega minus infinity to plus infinity, xt e to the power minus j omega dt. So the condition was there, this integration part in this integral should be less than infinity. That is completely integrable. Then we should go for continuous time Fourier transform. Otherwise, we have to go for Laplace transformation. So in the right side, I have shown you the Laplace transformation formulas x of s, that is x of sigma plus j omega. So here the real part is also there, sigma. Okay. So that is the formula minus into plus infinity xt. If you break s values, so xt into e to the power minus sigma t into e to the power minus j omega.
Now you compare these two expressions, continuous time Fourier transform and Laplace transformation. See, there is a little bit basic differences. Xt into e to the power sigma t. If you consider this is x1t, now see the formula is same. Minus infinity to plus infinity x1t e to the power j omega t dt. That means xt into e to the power sigma t. When if xt is not integrable completely, then if you multiply xt with e to the power sigma t, then if you make Fourier transform, continuous time Fourier transform, then it will give you the result, and that is equivalent to the Laplace transformation. So this is the case. Now in the case of Laplace transformation, already we have seen this is a real axis, this is imaginary axis. Okay, and we have seen that the ROC, okay, only depend upon the value of sigma. That does not depend upon the imaginary value, imaginary axis. Already we have explained in detail and had known so many numerations. Okay, so that was the case for Laplace transformation and the continuous time Fourier transform. Now in the case of DTFT, what was the formula? So there is a x of n, and x of n, that is x of e to the power j omega, that is the DTFT of xn. We have done this formula. Then formula is n is equal to minus infinity to plus infinity. X of n, the signal for which you have to make DTFT, and e to the power j omega minus j omega n. That was the formula. Okay, the condition was summation of r n is equal to minus infinity to plus infinity, mod of xn should be less than infinity. यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन इंटीग्रल पार्ट should be less than infinity, but in this case the summation should be less than infinity, that is bounded. For that bounded signal, then we go for DTFT. If it is not bounded, then we can't use DTFT. For that we have to go for Z transform. Okay, in that case we have to use Z transform. One more thing I had told you during DTFT case. In this case, there is a unit circle. Okay, see what is the value of this x e to the power j omega t, e to the power j omega t. This is basically your complex function, and there is a coefficient is 1 into e to the power j omega t. So basically what we write in polar form, r into e to the power j omega, or r into z theta, r into e to the power j theta. So in this case, r is 1. What is r means? R means the radius of a circle. R means the radius of a circle. Okay, but in this case, what is the value of a unit? 1. So magnitude is basically r indicating your magnitude. This complex number जो है, so r basically indicating your magnitude, and the value of r here is unit. Okay, so that means the radius of the circle is 1. Okay, so if you, this is the theta, the phase is 0. If phase changes, so it will make a circle, and the circle of the radius would be unit. So in DTFT, okay, there is a unit circle. Okay, there is a unit circle. There is a unit circle. Okay, so in less than infinity means finite, means the value should be within the radius, unit radius. If it goes beyond that, so we can't use DTFT. In that case, we have to use Z transform. Okay, so that means from there you can have idea. So in Z transform, this radius of this circle may not be unity. So it can take any values. Okay, so for that's why we go for Z transform. Okay, so what is the formula? X of n, x of z. Okay, so in Z transforms we are writing it as x of z. Okay, x of n. So because when DTFT fails, we go for Z transform. So DTFT we are using sequences, not continuous, discrete time sequences. So in that's why Z transform basically dealing with your discrete signals. With discrete signal. Okay, so that's why we are using discrete signal during your Z transform. Okay, but in the case of Laplace, we had used the continuous signal. So what is Z? X of Z.
So what is z? Z basically representing r into e to the power j omega. But यहाँ पे देखो DTFT में क्या था, x of e to the power j omega, that is r into e to the power j omega. So r का वैल्यू क्या था यहाँ पे 1 था, so 1 into e to the power j omega. But as I mentioned you, in the DTFT case there is a unit radius, but in the case of Z transform it's not a unit radius, it may take some other values also, maybe beyond that. Okay, maybe beyond that. So that's why I am writing in general r. R means r value, r can take any values. Okay, so Z is equal to r into e to the power j omega. Okay, now x of z is equal to x of z is equal to, okay, so z is equal to r into e to the power j omega. So x of z, that is x of r into e to the power j omega. So value of z is here. Okay, समेशन हुआ n is equal to minus infinity to plus infinity. देखो DTFT में क्या था, फॉर्मूला क्या है, x to the power j omega, but we are not writing here x here, x in the place of e to the power j omega. What are you writing? X of r into e to the power j omega. Okay, it is 1 into e to the power j omega. 1 क्या था, यूनिट रेडियस था, so that's why 1 into e to the power j omega. but z दशमलव में 1 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा in general. so x of r into e to the power j omega. तो देखो, so जहां जहां e to the power j omega था उसी जगह में हम क्या पुट करेंगे, r into e to the power j omega. So in the place of e to the power j omega in DTFT, if you place r into e to the power j omega, that converts your z transform. So basic difference is that radius, that is not a unit radius. Okay, the radius of the circle is r in general. So that's why n is equal to minus into plus infinity x of n. This is as it is. So therefore n is equal to minus infinity to plus infinity, n is equal to minus into plus infinity x of n same. Now देखो ये e to the power minus j omega. Okay, so minus n if you take outside, so e to the power j omega हो गया, e to the j omega. मैंने क्या बोला, e to the power j omega जहां जहां है you have to place r into e to the power j omega. so इसलिए देखो r into e to the power j omega, बाहर में क्या है, माइनस है. देखो ठीक से, ये माइनस यहाँ पे n है, तो माइनस n करके वो बाहर नहीं ले लो, अंदर में क्या होगा, e to the power j omega हो जाएगा. तो e to the power j omega जहां जहां है ये क्या पुट करेंगे, r into e to the power j, इसलिए r into e to the power j omega, बाहर में माइनस, होल टू द पावर माइनस है. So how this DTFT converts Z transform? Okay, that I am telling you. Okay, so DTFT and Z transform में the basic difference is that यहाँ पे solution यूनिट सर्कल में होता है, but in this case, in Z case, it is not only unit circle, it takes any value circle, the radius is varied. So this is the case. So ultimately, as I am writing r into e to the power j omega is equal to z, so x of z, x into r e to the power j omega. So r into e to the power j omega means z, so you can, that's why x of z, then is equal to minus n into plus infinity x of n. Now देखो r into e to the power j omega minus n हो गया, so r into e to the power j omega जो है you can write z also for the sake of simplicity. So ultimately we got the formula x of z is equal to summation of r n is equal to minus infinity into plus infinity x of n. यहाँ अंदर में क्या होगा, r into e to the power j omega mean z, r into e to the power j omega mean z, so z to the power minus n. So this is your formula for calculating z transform of signal x of n. So formula is, final formula is x of z, that is equal to n is equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. That is the formula. Okay. So now we can conclude something. Okay.
we got the expression, we got the final expression for Z transform. Now see, x of z is equal to x of z की जगह में r into the power j होगा. We can write summation of n is equal to minus n into plus infinity x of n unchanged. z की जगह में फिर से हम लिख दिया r into e to the power j omega. So r to the power minus n हो गया and e to the power minus j omega. Okay, and I am giving this is expression number 2. ये देखो xn into r to the power minus n. Now we can consider it's another function that is x1. तो क्या हो गया n is equal to minus n into plus infinity x1 n e to the power minus j omega n. Okay, so this is your expression number 2. Expression number 1 क्या है ये देखो DTFT का xn is equal to n is equal to minus n into plus infinity x of n e to the power minus j omega. तो बेसिक डिफरेंस क्या है xn के साथ r to the power minus n मल्टीप्लाई हो गया. देखो ओनली वन टर्म r to the power minus n हो गया, नहीं तो 1 and 2 में कोई फर्क नहीं. ठीक है, सो दैट आई एम राइटिंग हियर कंक्लूजन. क्या लिखा है देखो z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n. xn is the sequence, xn is the function, discrete sequence. So we are going to find out z transform of x of n. That is equal to equivalent to, we can write it equal to or equivalent, we can write three line parallel line dtft of किसका xn into r to the power minus n. तो ये सिमिलर है. देखो xn into r to the power minus n ये e to the power minus j omega n है. यहाँ पे देखो क्या है एक नंबर में xn into the power minus n, e to the power minus j omega n is constant factor. यहाँ पे xn है पार्ट, यहाँ पे क्या है xn into r to the power minus n. So if you write here xn into r to the power minus n, तो दोनों दो चीज में क्या है सिमिलरिटी आ गया, कोई फर्क नहीं है, अंत नहीं है, कोनो अंतर नहीं है. इसलिए यहाँ पे बोला गया है, मैं लिख दिया z of xn that is equivalent to dtft of xn into r to the power minus n. और reverse is also true. In that case you can write dtft of xn means z transform of xn but r is equal to 1. So if you make z transform with unit radius which is equivalent to dtft, understood or not? Because z transform में r का वैल्यू वेरिएबल है, but if you consider r is equal to 1 and if you do the z transform which is nothing but dtft which is equivalent to dtft, और xn के साथ r to the power minus n प्रोडक्ट करके if you dtft फाइंड आउट करोगे तो वो z ट्रांसफॉर्म का इक्विवेलेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो दो कंक्लूजन है ये समझना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए. ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है डीटीएफटी से z ट्रांसफॉर्म आ गया, कंटीन्यूअस फूरियर ट्रांसफॉर्म से तुम्हारा लैप्लास आ गया. तो ये जो रिलेशन है ये तुमको रिलेशन आना चाहिए. बाद में हम z डोमेन के साथ एस डोमेन का क्या रिलेशन है वो भी हम बताएंगे. ठीक है, तो xn के साथ r to the power minus n तुम मल्टीप्लाई करके dtft करोगे तो वो z ट्रांसफॉर्म का इक्विवेलेंट हो जाएगा. और z ट्रांसफॉर्म xn का z ट्रांसफॉर्म तुम जब r इक्वल टू 1 करके रेडियस यूनिट करके z ट्रांसफॉर्म करोगे xn का तो वो इक्विवेलेंट टू dtft हो जाएगा, क्योंकि dtft में रेडियस 1 होता है. ठीक है, तो देखो z ट्रांसफॉर्म का z डोमेन क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इधर, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इधर, and z is equal to r into e to the power j omega. यहाँ पर r is equal to 1 नहीं है, r is the variable, so that's why the circle is radius of the circle is r. जैसे जैसे तुम्हारा फेज चेंज होगा ये सर्कल हो जाएगा. सो यूनिट रेडियस यहाँ पे नहीं है, रेडियस इज r. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस. सो टिल नाउ व्हाट आई told you, that is the basic difference between DTFT and the Z transform. How Z transform come, how the Z transform formula is derived, and what is the drawback using your DTFT, but what is the drawback limitation, basically not drawback, you can say the term limitation of DTFT. So that limitation can be overcome by means of Z transform. Okay, if the sum that the if the a function is not completely summable, okay, so
in that case, that means the summation of n square minus into plus into x of n is not less than infinity. So in that case, we can't use DTFT. In that case, we have to use Z transform. So few things you have to remember when we go for some numerical problem. So that's why I am writing here to remember. Okay. So you have to remember. Already I told you Z is equal to R into e to the power j omega. What is the meaning of R? What is the meaning of e to the power j omega? I told you. Okay. So mod of Z, if you take modulus of Z, so you will get R, because this exponential term getting you unit value, and so mod Z means R. Okay. So amplitude of Z is R. Okay. So this is the thing, number one. Number two, मान लो तुम्हारे पास x इक्वल टू a टू द पावर इंफिनिटी है। ठीक ढंग से सुनिए, तुम्हारे पास क्या है, एक वेरिएबल x है, तो x इज इक्वल टू, वी हैव डिफाइंड इट इन दैट वे, a टू द पावर इंफिनिटी. So a is the variable here. Okay, you can take any value, any integer value. Okay, integer or maybe fraction. Okay, not necessarily it be integer. Not necessarily we are considering that a is integer. It can take any value. Okay, negative, positive, fraction, integer. Okay, so thing is that x कब इंफिनिटी होगा, x कब इंफिनिटी होगा, x इंफिनिटी होगा if a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, isn't it? a का वैल्यू मान लो 2, a is equal to 2. I am taking example to make you understand. So 2 to the power infinity, तो x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा. So how to bring x 0? If a का वैल्यू fraction, that is suppose half, a का वैल्यू a is equal to half, तो क्या हो जाएगा, हाफ टू द पावर इंफिनिटी. सो दैट मींस हाफ मींस 2 टू द पावर माइनस 1. सो 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो गया. सो 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी तुम तो जानते हो, 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी जब होगा 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी, सो दैट विल गिव यू 0. So when the value of a is less than 1, then x becomes 0. When the a का value greater than 1, that is integer value, then x का value infinity. So this is a basic thing, not it's a tough one. Okay, you can deal with it, not like that. So this is the case, you know that one, but I am just summarizing that. You know all these things, not necessarily you don't know these things. This is not new one. Okay, but I am telling you these things are applicable here whenever you are going for solving some numericals. Okay, so that's why I am reminding you, not necessarily I am giving you a new idea, because you people know all these things. Okay, now suppose और एक फंक्शन मैंने ले लिया something like that, y is equal to a to the power minus infinity. यहाँ पे जो था तो ये प्लस इंफिनिटी था, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, दैट मींस यहाँ पे जो चीज था वो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं, ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इंफिनिटी था, ये माइनस इंफिनिटी. सो नाउ इन दिस केस इफ a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ओके, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा. मान लो a का वैल्यू 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो 0 हो जाएगा ना. फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, लेस देन 1 के लिए क्या होगा, इफ हाफ टू द पावर माइनस इंफिनिटी करोगे, सो हाफ इटसेल्फ मींस 2 टू द पावर माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर प्लस इंफिनिटी हो गया, so that means infinity. So y is equal to infinity. So if that sort of expression comes a to the power minus infinity, in that case greater than 1 वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, एंड a का वैल्यू लेस देन 1 के लिए ये इंफिनिटी हो जाएगा. Just these two are just opposite to each other. These two functions are opposite to each other. Okay. So this is the thing. So that little bit you have to remember. If you remember this, in that case, solution will be more easier. Now, see, I am taking one example here. Okay. I am taking one example here. Suppose x of n का z transform is x of z. Okay. फॉर्मूला क्या है,
n is equal to minus infinity to plus infinity. Okay, x is equal to plus infinity, minus infinity to plus infinity, x of n z to the power minus n, where z is equal to r into to the power j omega. You know that. Okay. Now, for example, one x1n is equal to a to the power n u of n. जैसा जैसे तुम्हारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में था ए टू द पावर वहां पे u था, कंटीन्यूअस था, ठीक है। तो x1n क्या होगा, ये राइट साइडेड सीक्वेंस है कि नहीं, क्योंकि un है। सो n इज इक्वल 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो मान लो a का वैल्यू टू है, ठीक है। सो n का वैल्यू 0 होगा, 2 टू द पावर 0, ये 1, ठीक है। तो इफ यू टेक a का वैल्यू लेस देन 1 यार, ओके, तो क्या होगा देखो, ये पहला वाला जो है n का वैल्यू 0, सो समथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए ये 1 हो गया। ना मान लो a का वैल्यू हाफ है, नाउ इफ यू टेक n का वैल्यू 1, सो हाफ टू द पावर 1, तो क्या होगा 0.5 होगा, सो ये थोड़ा कम होगा। नाउ हाफ टू द पावर 2, सो 1/4 दैट इज 0.25, तो उससे ज्यादा, उससे कम होगा। सो दैट मींस क्या होगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n हियर, okay, if you increasing value of n here, तो क्या होगा, the value is x1n का value gradually decreasing, okay, up to infinity. So this is called right sided sequence. And if you take the value of a is beyond 1, so then it will be opposite, it will gradually increasing होगा, okay, it will be a little bit here, little the lower value will be the origin, and ultimately it will go and increasing up to the infinity, just opposite of this. Okay, so it is a basically I'm just showing you how a to the power n, basically this function changes, nothing more than that. Okay, and un is there, so that's why it will must start from 0 to positive infinity, negative side में कुछ नहीं रहेगा। Up to this I think is clear, and this signal is called right sided sequence. You will know that if un is multiplied, then you can say that it's a right sided sequence. Now find out the z transform of x1n. तो x1n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1z होगा। x1z x1z क्या होगा, n इज इक्वल टू माइनस इनटू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n, ये जो फॉर्मूला है। नाउ देखो n इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्यों, बिकॉज un इज देयर, ठीक है। सो un इज देयर फंक्शन में, x1 का वैल्यू क्या है, a टू द पावर n इनटू un, सो un इज 1 फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, लिमिट चेंज हो गया, so we have changed the limit factor here, a to the power n, z to the power minus n. Okay, so this is the values. Now I will rearrange, just we are rearranging the values 0 to infinity, a z to the power minus 1 करके बाहर में n करके लिख सकते हैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि दोनों में पावर n है, और माइनस 1 अंदर में रख दिया z का, सो a z to the power minus 1 होल है। Okay, now during Fourier transform, I have given some these formulas. So once again I am writing n is equal to 0 to infinity, limit जब 0 से infinity होगा, और a to the power n, इस तरफ जब सिग्नल होगा 1 plus a square, so we can summation, we can find it 1 by 1 minus a, if a is less than 1, 1 by 1 minus a, 0 से n तक ये इंफिनिटी था ना, फाइनाइट नंबर होगा ए टू द पावर n, तो ये क्या होगा 1 माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a. सो दिस आर द फॉर्मूला आई हैव रिटन ओवर देयर, यू रिमेंबर। और जब 0 टू फाइनाइट n 1 टू द पावर n होगा, उसका सम क्या होगा n प्लस 1। सो दिस थ्री फॉर्मूला यू कैन कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पे क्या है देखो, ये
some kind of a to the power n, some kind of that. Okay, so that's why क्या 1 by 1 minus a, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 by 1 minus this value a into z to the power minus 1, करेक्ट, ताले a into z to the power minus 1. so फॉर्मूला, so x1 z क्या निकल गया 1 by 1 minus a z to the z inverse a z inverse और z to the power minus 1. so okay, so this is your x1 z. have you any doubt up to this? No, sir. Okay, thank you. No, sir. So हाँ, तो this is your x1 z. Okay, so I think I am telling your class very slowly. If you listen carefully my words, so it may not be difficult. So now we'll take one more function. Okay, जैसे तुम्हारा Laplace transformation में हम लोग लिए थे, and दो फंक्शन का तुम्हारा Laplace transform सेम हुआ करते थे वहां पे, लेफ्ट साइड सिग्नल का राइट साइड सिग्नल का, both the cases Laplace transformation सेम था. so for that ROC आ गया था, how to select, how to choose perfect one. राइट साइड और लेफ्ट साइड का रिजल्ट सेम है, लेकिन कुछ तो अलग होना चाहिए, अलग कौन सा है वो ROC. so here also we are going to moving to ROC part. Okay, so that's why I am taking one more example here, the left sided sequence. Okay, left sided sequence क्या है, x to n है, ये माइनस a to the power n u of minus n minus 1. तो u of minus n minus 1 means ये सिग्नल कहां से कहां तक एग्जिस्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, क्योंकि ये माइनस एन माइनस 1 है, शिफ्टेड है, u of माइनस n नहीं है, ये u of माइनस n माइनस 1. सो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक ये रहेगा, करेक्ट. सो दिस इज योर लेफ्ट साइड सीक्वेंस. सो नाउ फाइंड आउट द z transform x to z is equal to minus infinity to minus 1, minus is there, this minus is there, a to the power n z to the power minus n. same way n is equal to minus infinity से plus 1, n is equal to minus 1 से minus 1 तक होगा, n is equal to minus infinity से minus 1 तक होगा, क्योंकि u of minus n minus 1 एग्जिस्ट है वहां पे. एंड क्या है, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, a to the power minus 1 z माइनस 1 माइनस n बाहर निकल गया, तो माइनस n बाहर में है, इसलिए दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा, सो a to the power n ही होगा, कोई फर्क नहीं है, एंड z to the power minus n. तो ये है तुम्हारा. बट देखो we don't have this sort of summation here, so we can't put values, isn't it? समेशन निकालने में दिक्कत होगा, इसलिए we'll modify this function. Okay, we'll definitely modify this function. Okay, how to modify? Now we are taking this minus n. Okay, we are just taking minus n is equal to m. Okay, this minus n is equal to m. तो ना लिमिट फैक्टर क्या होगा, जब n का वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो m प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और जब n का वैल्यू माइनस 1 है तो m का वैल्यू प्लस 1 हो गया. सो लिमिटिंग फैक्टर हैज बीन चेंज. ओके, प्लस इंफिनिटी से प्लस 1 तक हो गया. ओके, प्लस इंफिनिटी से प्लस 1 तक हो गया. तो नाउ पुट दिस लिमिट वैल्यूज. सो x to z is equal to m is equal to minus 1 से प्लस इंफिनिटी तक a minus 1 z होल टू द पावर माइनस n की जगह में m हो गया, ठीक है. तो यही बात है, माइनस इज देयर. नाउ यू कैन सेपरेट इट, सी यू कैन पुट द वैल्यूज हियर. ओके, you just open the function here, just you are opening it. m का वैल्यू 1 है तो a to the power minus 1 a इनवर्स z हो गया, a इनवर्स z होल स्क्वायर, a इनवर्स z होल क्यूब, m का वैल्यू जब इंक्रीज हो रहा है एंड बाहर में माइनस. ओके, फॉर्मूला है सर, इसको डायरेक्टली भी तो पुट कर सकते हैं. हाँ बाबू, सर जो आप फॉर्मूला लिखाए थे जेड ट्रांसफॉर्म का, हाँ हाँ, जो इसके फॉर्मूला इस पे भी यूज. हाँ ये फॉर्मूला हम लोग आन रहे हैं, ये बना रहे हैं. ये फॉर्मूला इस तरफ तो नहीं है, थोड़ा अलग है, इसलिए वो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. उस तरफ जो फॉर्मूला 3 जो फॉर्मूला है
उसी से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं देखो, इसके बाद ये जो ए इनवर्स जेड है वो बाहर में ले लिया, माइनस ए इनवर्स जेड। सो अंदर में क्या हो गया देखो, ये 1 हो गया, ये पावर 2 था, 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 2 हो गया, 4 3 हो जाएगा, तो इस तरफ होगा। तो नाउ देखो, ये माइनस ए इनवर्स जेड बाहर में है, और समेशन को तुम इस तरफ लिख सकते थे। देखो एन इक्वल 0 टू इंफिनिटी ए इनवर्स जेड होल टू दी पावर n, तुम लिख सकते हो ना। देखो जीरो, एन का वैल्यू 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, एन वैल्यू 1 होगा तो ये आ जाएगा, एन वैल्यू 2 होगा तो ये आ जाएगा। सो दैट मीन्स दैट एक्सप्रेशन विद इन जो ब्रैकेट है वो हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। दिस इज बेसिकली ये सिंपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज नॉट देयर। तो ये माइनस ए इनवर्स जेड बाहर में हो गया, और ये जो होगा 0 टू इंफिनिटी, नाउ वी गॉट द फॉर्मूला 1/1 माइनस ए। सो 1/1 माइनस ए इनवर्स जेड, ये फॉर्मूला हमको मिल गया, ये वाला 1/1 माइनस ए, 0 टू इंफिनिटी ए टू द पावर, ये मिल गया। तो इसलिए क्या हो गया तुम्हारा रिजल्ट, एक्स टू जेड का माइनस ए इनवर्स जेड बाय, बाहर में हम नीचे में देखो हम क्या लिए हैं, ए इनवर्स जेड कॉमन ले लिया। तो ए इनवर्स जेड कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स जेड, और इसके लिए ए 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए जेड इनवर्स माइनस 1 हो गया। सर ये देखो ए इनवर्स जेड ले लिया, तो यहाँ पे ए इनवर्स जेड है तो ये 1 हो जाएगा, देखो -1 हो गया। और यहाँ पे 1 था, जो यहाँ पे 1 होने से क्या होगा, ऑपोजिट होना चाहिए, तो इसलिए ए इनवर्स से कॉमन लिया तो ये ए हो गया, और जेड की जगह में जेड इनवर्स हो गया। तो देखो इफ यू मल्टीप्लाई इट सो इट विल बी 1 एंड माइनस ए इनवर्स जेड हो गया। सो कोई अलग कुछ हम नहीं लिखे, ओनली ए इनवर्स जेड लिया, क्यों ले लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में जो है ए इनवर्स जेड ऊपर में है, सो नीचे में ए इनवर्स जेड है, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया देखो, ये माइनस भी हम लोग ले लिया, अल्टीमेटली 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स हो गया। ए इनवर्स जेड -1 था, तो -1 कॉमन ले लिया, ये -1 काट गया, सो 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। तो एक्स टू जेड क्या हो गया, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ना देखो क्या मजा है, x1 जेड और x2 जेड दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया जेड ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये तो है, लेकिन कुछ तो अलग होना चाहिए, सेम सीक्वेंस, डिफरेंट सीक्वेंस के लिए सब कुछ तो सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके साथ ये कन्वर्सन जो फॉर्मूला है, इसके साथ और कुछ होना चाहिए जो डिस्टिंग्विश करेगा दोनों